Hello students, how are you? Are you fine? Let's continue our today's topic. Before starting today's topic, we will remind the topic completed in last lecture. In last lecture we had completed preparation of carboxylic acid by hydrolysis of alkyl cyanide, and second method was the preparation of carboxylic acid by hydrolysis of acid chloride and acid anhydride. Out of them, acid chloride is completed. Now today we will study hydrolysis of acid anhydride. Acid anhydride formula R, single bond C double bond O, single bond O single bond C double bond O, or it is acid anhydride. Now when acid anhydride undergoes hydrolysis, then it forms the two molecules of carboxylic acid. So acid anhydride undergoes hydrolysis to form the two molecules of carboxylic acid. Now see here how reaction takes place. Now these are C double bond O. These water undergoes dissociation to form H positive and OH negative, right? R C double bond OO, and this hydrogen combines to form R C double bond OOH. Second, R C double bond O, and these OH they combines to form second molecule of R C double bond OOH. So when acid anhydride undergoes hydrolysis, then it forms two molecules of carboxylic acid. तो बेटा जब बेटे एसिड अनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस होता तो बेटा वो फॉर्म करता कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, हियर अल्काइल ग्रुप शुड बी सिमिलर. यहाँ बेटे दोनों अल्काइल ग्रुप बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. नाउ वी विल स्टडी एग्जाम्पल. देर इज नो एग्जाम्पल इन आवर सिलेबस, बट वी नो दैट वी आर स्टडी अबाउट विथ एग्जाम्पल्स और along with examples. चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल CH3, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3. It is acetic anhydride. Now when acetic anhydride undergoes hydrolysis, now this water undergo dissociation to form the H positive and OH negative. Now this CH3 C double bond OO and this H positive combines to form CH3 C double bond OOH. CH3 C double bond O and this OH combines to form CH3 C double bond OOH, means two molecules of acetic acid. IUPAC name ethanoic acid. So when acetic anhydride undergoes hydrolysis, then it forms two molecules of acetic acid. Second example, take propionic anhydride C2H5, single bond C double bond OO, single bond C double bond O C2H5. It is propionic anhydride. So when propionic anhydride undergoes hydrolysis, जब बेटा propionic anhydride का बेटा क्या होगा, hydrolysis. So water undergo dissociation to form H positive OH negative. C2H5 C double bond OO and this H
combines to give C2H5C double bond OOH. Then second molecule C2H5C double bond O, and this OH combines to give second molecule of C2H5C double bond OOH, and this acid is called propionic acid. IUPAC name propanoic acid. So when acid anhydride undergoes hydrolysis, then it forms two molecules of carboxylic acid. Acetic anhydride undergoes hydrolysis to form two molecules of acetic acid. Propionic anhydride undergoes hydrolysis to form two molecules of propionic acid. So in this way, carboxylic acid is formed by the hydrolysis of anhydride. Chलिए, third method for preparation of carboxylic acid, that is by hydrolysis of ester. By hydrolysis of ester. Ester, याद है बेटा? Right? Two alkyl groups are directly attached with ester group. That compounds are called ester. Now hydrolysis means reaction with water. So बेटा अब हाइड्रोलाइसिस करना है ईस्टर का, और बेटा उससे प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस के बेटा दो टाइप है. वन इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड सेकेंड वन इज एन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस. नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट्स मीनिंग. Acid hydrolysis, hydrolysis carried out by using acid. तो बेटा वो हाइड्रोलाइसिस जो एसिड का यूज करके होता उसे बोलते हैं बेटा एसिड हाइड्रोलाइसिस. एंड दोज हाइड्रोलाइसिस कैरिड आउट बाय यूजिंग अल्कली बेस, दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, there are the two types of hydrolysis of ester. One is the acid hydrolysis of ester and second one is an alkaline hydrolysis of ester. चलिए, first of all we will start acid hydrolysis of ester. Now when ester undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4. अब बेटा अगर dilute H2SO4 यूज नहीं करना है, so we can use dilute HCl. Out of these two acid, any one acid is used. So when ester undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4 or dilute HCl, then it forms carboxylic acid along with alcohol. Now it is the important reaction, because in this reaction alcohol is formed along with carboxylic acid. बेटे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल फॉर्म हो रहा, इसलिए बेटा ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सी रिएक्शन, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इट इज ईस्टर. आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इट इज ईस्टर. सो व्हेन ईस्टर अंडरगोज hydrolysis, now water undergoes breaking to form the H positive OH negative. ठीक है. अब बेटा ये R C डबल बॉन्ड O O, R C डबल बॉन्ड O O, और बेटा इसमें का H, they combines to form R C डबल बॉन्ड O OH, it is carboxylic acid. और बेटा these are combined with OH to form ROH. ROH means alcohol. एक बार फिर देख लो बेटा रिएक्शन, R C double bond O O R, it is ester. So when ester undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4 or by using dilute HCl, R C double bond O O and hydrogen from water
combines to form RC double bond OOH. It is carboxylic acid. These are combined with OH to form ROH. ROH means alcohol. So when ester undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4, then it forms one molecule of carboxylic acid and one molecule of alcohol. Right? Now here hydrolysis carried out by using dilute sulfuric acid or dilute HCl. Therefore it is called acid hydrolysis of ester. Shall I take the example? First one, CH3, single bond C double bond OOCH3. It is methyl acetate. This much acetate group. Methyl group is attached to acetate, therefore it is called methyl acetate. So when methyl acetate undergoes hydrolysis, so बेटा जब methyl acetate का hydrolysis होगा, so these H positive और ये बेटा OH negative. So CH3 C double bond OO combine with H positive to form CH3 C double bond OOH. It is acetic acid. IUPAC name ethanoic acid. Now what will left here? CH3. This CH3 combine with OH to form CH3OH. CH3OH means methyl alcohol. So when methyl acetate undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4, then it forms one molecule of acetic acid and one molecule of methyl alcohol. Acetic acid IUPAC name ethanoic acid और बेटा ये methyl alcohol methanol. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, ethyl acetate. CH3 C double bond OO C2H5. It is ethyl acetate. This much group is called acetate group, and ethyl group attached to acetate, therefore it is called ethyl acetate. So ethyl acetate undergoes hydrolysis in presence of dilute H2SO4. Water undergoes dissociation to form H positive, OH negative. Now this CH3 C double bond OO and this H combines to form CH3 C double bond OOH. CH3 C double bond OOH, it is acetic acid. Now this C2H5 combined with OH to form C2H5OH. So ethyl acetate undergoes hydrolysis by using dilute H2SO4 to form one molecule of acetic acid and one molecule of ethyl alcohol. So in this way ester undergoes acid hydrolysis to form carboxylic acid. So when ester undergoes acid hydrolysis, then it forms one molecule of carboxylic acid and one molecule of alcohol. Understood? Any difficulty up to here? Now let's continue other hydrolysis, that is alkaline hydrolysis. So alkaline hydrolysis means the hydrolysis carried out by using alkali like NaOH और KOH. बेटा वो हाइड्रोलाइसिस जो बेटा अल्कली को यूज करके होता. किसको यूज करके होता बेटा? अल्कली. कौन से अल्कली? NaOH, KOH. That hydrolysis is called alkaline hydrolysis. Now keep one thing in your mind. These alkaline hydrolysis of ester, it is a two-step reaction. ये बेटा दो स्टेप की रिएक्शन है. Now in the first step, ester react with or boiled with NaOH or KOH to form sodium or potassium salt of acid. In second step, sodium salt or potassium salt of acid
react with water to form कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती। कितने स्टेप में होती? 2 स्टेप में। व्हाट हैपन इन द फर्स्ट स्टेप? इन द फर्स्ट स्टेप ईस्टर रिएक्ट विथ NaOH, और अगर बेटा NaOH यूज नहीं करना है तो KOH। सो ईस्टर अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस और रिएक्ट विथ NaOH और KOH टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। NaOH लिए बेटा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, KOH लिए तो बेटा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। Now this sodium or potassium salt of acid react with water to form carboxylic acid. Now we will see general reaction and then examples. Now see here. So directly we will see the example. There is no need of general reaction. ठीक है? So first example CH3 single bond C double bond OOCH3. It is methyl acetate. So in the first step, when methyl acetate react with NaOH, जब बेटा मिथाइल एसीटेट बेटा रिएक्ट करेगा किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH मीन्स it is sodium hydroxide. Instead of NaOH, we will take the KOH. बेटा NaOH की जगह अपन KOH भी ले सकते हैं। ठीक है? Now see here, CH3 C double bond OO. Now these NaOH undergo dissociation to form Na positive OH negative. CH3 C double bond OO और बेटा इसमें का Na। CH3 C double bond OO और बेटा इसमें का Na। They combines to form CH3 C double bond OO Na. This compound is called sodium acetate. इसे बोलते बेटा हम सोडियम acetate. What we left here? CH3. From here OH. They combines to form CH3OH. CH3OH means methyl alcohol. So in the first step, methyl acetate react with sodium hydroxide or heated with sodium hydroxide to form sodium acetate. Now in second step, this sodium acetate undergoes hydrolysis or it react with water. ठीक है? Now water undergoes dissociation. अब बेटा these Na combine with OH to form NaOH. Na combine with OH to form NaOH. NaOH means sodium hydroxide. Now what we left here? CH3 C double bond OO. From here H, they combines to form CH3 C double bond OOH, and this acid is called acetic acid. IUPAC name ethanoic acid. So when methyl acetate heated with sodium hydroxide, first it forms sodium acetate. Sodium acetate react with water to form acetic acid. Second example, methyl propionate C2H5 single bond C double bond OOCH3. It is methyl propionate. Now when methyl propionate heated with sodium hydroxide, ठीक है? Now this CH3 combine with OH. CH3 बेटा combine होगा. NaOH undergo dissociation to form Na positive OH negative. CH3 combine with OH to form CH3OH. It is methyl alcohol. Now this C2H5 single bond C double bond OO, it combined with Na. C2H5 C double bond OO, it combined with Na to form C2H5 C double bond OO-Na, and this compound is called sodium propionate. इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हम सोडियम प्रोपियोनेट.
Now in second step, this sodium propionate react with water. सेकेंड स्टेप में बेटा सोडियम प्रोपियोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? वाटर के साथ. नाउ दिस Na पॉजिटिव कंबाइन विथ OH नेगेटिव टू फॉर्म NaOH. Na पॉजिटिव बेटा कंबाइन हुआ OH के साथ, बना बेटा NaOH. अब बेटा C2H5 C डबल बॉन्ड OO और बेटा इसमें का H, दे कंबाइंस टू फॉर्म C2H5 C double bond OH, and this compound is called propionic acid. IUPAC name propanoic acid. So in this way, ester undergoes alkaline hydrolysis. So methyl acetate heated with sodium hydroxide to form sodium acetate. Sodium acetate react with water to form acetic acid. Methyl propionate react with NaOH to form sodium propionate. Sodium propionate react with water to form propionic acid. These are the examples of alkaline hydrolysis of ester. अब बेटा keep one thing in your mind. अगर बेटा NaOH की जगह अपन ने KOH लिए, क्या लिए बेटा? KOH दिखाई दे रहा ना? तो यहां Na के जगह आएगा K, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड. दीज आर दी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड KOH लिए तो बेटा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड. नाउ कीप वन थिंग योर माइंड, दिस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज सोप. ये जो बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है और बेटा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, मगर हाइयर फैटी एसिड है, हाइयर फैटी एसिड तो बेटा उसे बोलते हैं सोप. सो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड इज कॉल्ड एज सोप. तो बेटा इस रिएक्शन में सोप फॉर्म हो रही ना, देयरफॉर दिस अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. इसलिए बेटा इस रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. दोज रिएक्शन इन विच सोप इज फॉर्म, वो रिएक्शन बेटा जिसमें सोप फॉर्म होती. क्या फॉर्म होती बेटा? सोप फॉर्म होती. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. सो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर is called as saponification reaction, and this sodium or potassium salt of acid is called as soap. Okay, चलो 3 मेथड हो गया बेटा. In next period we will study another method for preparation of carboxylic acid, that is by addition of Grignard reagent on solid carbon dioxide और ड्राई आइस. वो बेटा अपन स्टडी करेंगे कल.